Namaste dosto, hello friends. Welcome to the Hindi grammar section of my channel. Today we will talk about Kriya, verb. As you can see in the Vishaya Suchi, the content list, there are 20 topics to be covered in the Hindi grammar section. We have already done 8 topics. Today is the ninth topic, Kriya. Kriya, what is Kriya? In English grammar, we call Kriya as verb. So let's see the definition of Kriya in Hindi. जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है. सो एनी वर्क which signifies or denotes the action or the position of person or a thing is known as kriya. In short we can say क्रिया का अर्थ होता है कार्य करना. What is कार्य? कार्य is actually the work. संस्कृत में क्रिया के रूप को धातु कहते हैं. हिंदी में इन धातुओं के साथ ना लगता है. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल. उदाहरण: खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, कूदना, चलना. So in Hindi we have added na at the end of each of the Sanskrit dhatu so as to make them kriya. Example sentences: लड़कियां गाना गा रही है, अजित पढ़ रहा है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, अनामिका रो रही है. क्रिया के भेद. क्रिया के भेद is in two category. First is as per the karm. Second is as per the prayog. Karm is as per the work and the other one is as per the usage. So as per karm, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद. There are two types of क्रिया के भेद. अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया. प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद. There are several क्रिया के भेद as per प्रयोग के आधार पर, but we have discussed over here only 5 types of kriya based on the prayog, that is on the usage. संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया. Now we will see these in detail. कर्म के आधार पर क्रिया के भेद. What we have seen, there are two types of भेद or the types of kriya based on karm. The first is अकर्मक क्रिया. In English we call it intransitive verb. What is it? अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जो अपने साथ किसी कर्म या वस्तु को नहीं लेती. Please note it. It does not take along with it any other work or any other thing. Example: शीला हंस रही है. It's a separate individual verb. राहुल रो रहा है. वह खेलता है. पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है. सीता खाती है. Next is सकर्मक क्रिया, that is transitive verb. सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जो अपने साथ, नाउ अपने साथ कर्म या वस्तु को लेती है. That means it considers along with self the work or the thing, existence of any supporting work or thing along with it. This kind of verb is known as सकर्मक क्रिया or the transitive verb. Examples: सुमित ने सेब खाया. See over here, we have taken the help of the vastu सेब. क्या खाया? The question if I ask, सुमित ने क्या खाया? Or we can say what did Sumit eat? The answer will be सेब खाया. मोहन पानी पी रहा है. पी रहा है is the verb क्रिया. What? क्या पी रहा है मोहन? पानी पी रहा है. वह हर बसंत ऋतु में फूल उगाता है. क्या उगाता है? What? फूल. रमेश बाजार जा रहा है. Now, where is Ramesh going? बाजार. सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के अंतर. We can see the difference at a glance over here. सकर्मक क्रिया, इसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित होते हैं. You can see in the examples, कर्ता, the person, the individual who is doing the action.
kriya, the work as well as the object on which or the object with which the work is related. All these three things are present in this sakarmak kriya. Whereas in akarmak kriya, इसमें कर्ता और क्रिया तो होते हैं लेकिन कर्म नहीं होता है. What is being done, on what is being done, that particular thing is missing in akarmak kriya. So if you put the question kya over here, that is what, you will not get the answer. Whereas over here, if you ask with the question kya, then you will get the answer. That is sakarmak kriya and this is akarmak kriya. Second difference, sakarmak kriya इसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य से कोई दूसरी चीज प्रभावित होती है. That is, the person who is doing this action is influencing some other object or some other thing also. Whereas in अकर्मक क्रिया इसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य से किसी और चीज पर प्रभाव नहीं पड़ता. There is not at all any influence of the action of the person who is doing this on any other object or place or action. Fine. Over here you can see in Akarmak Kriya example, we see that Rahul ro raha hai. Is it affecting any other thing? No, it is an individual separate thing that he himself is crying. Rahul is crying. That is, this is Akarmak Kriya. And similarly, when we see that वह हर बसंत ऋतु में फूल उगाता है. So, वह is the कर्ता over here, the person who is doing this. And where is the influence falling? किस पर प्रभाव पड़ रहा है? On the फूल. ठीक है. So this is सकर्मक क्रिया and the above is अकर्मक क्रिया. प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद. So the types of kriya depending on the usage. There are several types we have discussed, mainly the 5 types. First is संयुक्त क्रिया. In English we called it as compound verbs. So let's see this. जब क्रिया दो या दो से अधिक के मेल से बनी हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं. That means more than one, two or more than two verbs are added together. This kind of verbs are known as compound verb. Example, अजित ने पत्र लिख दिया. लिख दिया है. So this is compound verb or the संयुक्त क्रिया. Next, रोहित ने खाना खा लिया है. खा लिया. Next, सहायक क्रिया, which is also known as auxiliary or the helping verbs. Why? जो क्रिया शब्द मुख्य क्रिया की वाक्य निर्माण में सहायता करते हैं उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं. So there is a primary kriya which is being held by some helping verbs. These kind of helping verbs are known as sahayak kriya. Example, बच्चे खेल रहे थे. हर्ष रो रहा है. रहा. These are what? Helping verbs. सहायक क्रिया. प्रेरणार्थक क्रिया, causative verbs. जिन शब्द के माध्यम से पता चलता है कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को कार्य करने को प्रेरित कर रहा है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं. That means the karta, the person who is doing, who is actually the doer in the sentence, but the action is being done through someone else. In that type of verb, we say it as prernathak kriya because the person is inspiring or motivating or rather telling someone else to get that work done. जैसे पुनीत ने मुकुल से काम करवाया. The who is the karta? The main person who is the doer of is Puneet. But the work, the action is being done through whom? Not by Puneet. He has taken help of Mukul. Similarly, Malkin ने रामू से केले मंगवाए. Who got kele? Actually, who is the person who got these kele? Malkin. But did Malkin do this action, complete this action? No. The action was completed by Ramu. So, यहाँ Malkin ने खुद स्वयं यह काम नहीं किया. उसने रामू को प्रेरित किया यह काम करने के लिए. उसने रामू से केले मंगवाए. Next, पूर्वकालिक क्रिया, which is anterior verb. पूर्व means before. जिन क्रिया शब्द को मुख्य क्रिया से पूर्व किया जाए उन्हें पूर्वकालिक कहते हैं. So there is a primary verb over here again and the पूर्वकालिक क्रिया is actually being done before this primary क्रिया. जैसे मोहन पढ़कर खेलने जा रहा है. So Mohan's primary verb is what? खेलना, playing. But before खेलना, what has he done? He has studied, पढ़कर.
सो मुख्य क्रिया है पढ़कर, मुख्य क्रिया है खेलने एंड पढ़कर है उसका पूर्वकालिक क्रिया। राधा ने स्नान करके पूजा किया। यहाँ मुख्य क्रिया क्या है? पूजा करना मुख्य क्रिया है, लेकिन पूजा करने से पहले राधा ने क्या किया है? राधा ने स्नान किया है। सो स्नान करके इज द पूर्वकालिक क्रिया बिकॉज इट वॉज डन बिफोर द मेन वर्ब पूजा। नेक्स्ट, नाम धातु क्रिया। What is it? It is known as nominal verb in English. संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों में प्रत्यय, that means at the end, जोड़कर बनी क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। That means in noun, pronoun and in adjectives, there are certain particular endings. When we add those things, the meaning of those changes to a verb from noun, sarvanam, noun, pronoun and adjectives. जैसे हाथ, this is what? This is a noun. Fine. When we add this pratyay yana, it becomes hathiyana. Similarly, bath, we added what? Yana. It has become batiyana. Dukh, dukhana. Chikna, chiknana. Lathi, lathiyana. That is iyana. Padhna, there can be two types, padhana or padhwana. Sharm, sharmana. Adi. There are several more examples. धन्यवाद दोस्तों. Thank you friends. Please don't forget to watch our next videos for learning easy and simple Hindi through English. Like, share and subscribe my channel for more and more learning, and don't forget to give your feedbacks in the comment section for improving and learning better and better. Namaste.